बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, तो वो पुराने समय में जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जीतता था तो उसको बंदी बनाकर, बांधकर उसको लेकर वापस आया जाता था. Where Bible says Jesus made an open show of principalities and powers. So I don't know about others. मैं औरों के विषय तो नहीं जानता. But that should be the image of devil for you. He is bound and rendered powerless against you and your family. वो बंधा हुआ है, वो हारा हुआ है. उसकी शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह तबाह कर दी है. He is disarmed and he is defeated. Amen. और जो राजा जो जीतता था, उसकी जो प्रजा होती थी, his people, they used to dance. So there is a victorious king. I want you to imagine this scene. मैं चाहता हूं इस बात की कल्पना करो. There is a victorious king. एक जयवंत राजा है. There is a defeated king. And the victorious king, his kingdom, his people are dancing and rejoicing, and we call it a victory march. हम उसको एक victorious march कहते हैं. The church has given for long a very wrong image of devil. He's too big, he's too powerful. No, my Bible says my Lord Jesus Christ spoiled principalities and powers and made an open show of them. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया. Hallelujah! Our King is victorious. अगर हमारा राजा जयवंत है तो हम हारे हुए कैसे हो सकते हैं? How can you belong to a kingdom in which the king is victorious and you live a defeated life? That's not possible. Amen. So before we go into the word, आज हम वचन में जाएं इससे पहले, I want you to ask Holy Spirit to give you this picture of an overcomer. Amen. We are not overcomers in our own strength. हम लोग जयवंत अपने बल में नहीं. Not according to our talent, not according to our holiness, and not according to our godliness. But we are conquerors through Him, the Bible says. वचन कहता है उस जयवंत मसीह के द्वारा आप और मैं भी जयवंत हैं. Amen. अभी लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे. There can be a striker who can strike a goal, but the victory is enjoyed by the entire team. एक व्यक्ति गोल करता है मगर जय पूरी टीम को मिलती है. We are on the winning side. I said we are on the winning side. हम जयवंत टीम में हैं. Hallelujah. So no matter what you're going through, यही शैतान चाहता है. That's what devil wants. That's why he's called the father of lies. He wants to convince you that he is too big for you. वो आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो बहुत बड़ा है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है. He is a toothless serpent. आप जानते हैं सांप का जो जहर होता है वो कहां पे होता है? Fangs, you know, उसके दो दांत जो होते हैं उसमें होता है. तो अगर उसके दांत तोड़ दिए तो फिर क्या होता है? फिर अगर वो काटेगा आपको तो आपको मसाज लगेगी. Jesus said,
The prince of this world is coming and he has nothing in me. Amen. Not only a risen savior, केवल हमारा जयवंत राजा नहीं. In fact, the Bible says, if we are living a life that is submitted to God, अगर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पण है, first condition, if your life is submitted to God, अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण है, not perfection, because nobody is, not perfection but submission. Say not perfection but submission. God is not demanding perfection, but He is asking for submission. अगर आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण है, then the word of God says that you, say me? Yes, the Bible says you will resist the devil and he will flee away from you. Not only from Jesus, from you. आपसे भागेगा. And when if you do a study of this word, he will flee away. See, the Greek is very rich. Hebrew is rich. यूनानी में इसका जो मतलब है, he will run away in terror. Devil will run away in terror from a victorious believer. Okay? बहुत साल तक आपने आंसू बहाए हैं, अब जय की ललकार लगाने के लिए तैयार हो जाए. जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो चंगाइयां होने लगी, तो somebody sent me a message. किसी ने मुझे मैसेज भेजा, oh, your ministry is going through a season of healing. And I tried to search it in the entire Bible, but I didn't find a verse where Jesus said, my followers will heal in a season. I want you to come out of this season-based Christianity. Victory is not for a season. His victory is everlasting. I said His victory is everlasting. And in His victory is your victory. In His overcoming is your overcoming. Hallelujah. So, मेरा तो बहुत मन है आज दबा के डांस करने का. Amen. People send me comments. Are you guys crazy? Yes. We are more than what you think. Okay. Let me tell you, it is, many people don't understand dance is spiritual. Did you hear what I just said? Dance is spiritual. I said dance is spiritual. लोगों को ये नहीं पता. People think only prayer is spiritual. Dance, there is a time to pray and there is a time to dance. And you should know when you are led by the Spirit. Today is the day to dance. Because I'm telling you, what I feel in my spirit, many of you are coming out of your court cases victorious in Jesus' name. Many of you, your reports are changing in the name of Jesus. Many stories are being changed in this place in the mighty name of Jesus. Okay? So, quickly मैं आपको बताऊंगा, maybe एक दिन मैं आपको इसमें teaching दूंगा. Do you know there are dances? Do you know that witch doctors dance? You don't know that. आप जानते हैं जादू टोना वाले करने वाले भी डांस करते हैं. Why do you think people who are getting drunk in pub are dancing? A spiritual transaction is happening. People don't know it. It's not just mere enjoyment. लोग शराब पी के pubs में, bars में नाचते हैं. एक आत्मिक अदला बदली हो रही है. There's a transaction happening. But when we, the people of God,
We don't need alcohol to rejoice. In His presence is the fullness of joy. And at His right hand are pleasures forevermore. Amen? Let me tell you, I have personally seen this. जब आप एक ऐसे क्रॉस रोड में हो, जब आप एक ऐसी जगह हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, shut your door and dance in your room. एक बुरी परिस्थिति में केवल एक वो व्यक्ति आनंद मना सकता है जो विश्वास को समझता है. In the time of trouble, only a person who understands faith can rejoice. Amen? And when you rejoice, heaven notices. Angels are dispatched on your behalf. There are things the Lord does behind the scenes. That's why, do you know, many people think, many sophisticated Christians think, why are these people shouting? We are shouting because our God has commanded us to shout. Do you know shouting is a command in God's presence? He says, shout, make a joyful shout, make a joyful noise. Amen? I have to teach you something, otherwise I would have gone to this place. Anyway, दुनिया अच्छी खबर सुनकर डांस करती है. क्योंकि हम डांस करते हैं, अच्छी खबर आती है. We are rejoicing because we know what God is about to do for you and for me. Hallelujah. Hallelujah. Oh, if only you would know what is about to happen to you, you would rejoice. And what God says many times sounds illogical. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमारे शारीरिक मनुष्य को वो अजीब लगता है. Think about this. Devil cannot create anything. He can only counterfeit what God has done. शैतान बना नहीं सकता, केवल कॉपी करता है. He is a cheap copycat. बाइबल बताती है पुराने नियम में जो वाचा का संदूक था, the ark of the covenant used to represent the manifest presence of God. जो पुराने नियम में वाचा का संदूक था वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था. और वचन कहता है दाऊद आत्मा में झूम कर नाचने लगा और जहां जहां दाऊद जाता वाचा का संदूक उसके पीछे पीछे जाता. Somehow God is so drawn to your dance. Amen. We don't dance to show people our moves. The Father who sees in secret your hidden moves will stand strong on your behalf. Amen. So आज मैं चाहता हूं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचो. See, let me tell you one thing. What the church has lost. The church has lost the art of coming together, believing for impossible. We come expecting a nice sermon, and that's what we get. But people in the old times, पुराने समय में लोग एक अच्छे संदेश के लिए नहीं, उन्हें पता था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी असंभव संभव हो जाएगा. सो मैं चाहता हूं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचो जो असंभव है. It can be your son has autism and doctor said he will never be healed. It can be a cancer report. It can be a financial turmoil. It can be a relationship problem. You're on the verge of getting divorced. But today, आज
आप आनंदित होगे ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, वो सामर्थी है. There is no situation that my God cannot turn around in a twinkling of an eye. What seems impossible to man, God says, watch me how I'm going to transform your situation. And I'm going to make a way where you think there is no way. Amen. So I think let's have the same song. कितने लोग rejoice करने लेते? When you rejoice, when you dance, you are showing faith in your heavenly Father. आप विश्वास को प्रकट कर रहे हो अपने स्वर्गीय पिता पर, और साथ में आप शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे हो. You're doing what Lord Jesus did. Victory march. Are you ready for the victory march, church? Amen. प्रभु यीशु मसीह एक हारी हुई डरपोक कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा. Jesus is coming back to take a blameless, spotless, courageous and victorious bride. It's high time the church has a victory mindset. Amen. कई बारी लोग प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट में ज्यादा फोकस करते हैं. When the book says the revelation of Jesus Christ, that's the problem. Many people are so centered on negative. अगर डाउट हो तो आखिरी चैप्टर पढ़ लेना रेवलेशन का. We are already victorious. Amen. I said हम पहले से जीते हुए हैं. मैच फिक्स्ड है. मैंने कहा मैच फिक्स्ड है. अगर आपको पता हो कि आपकी साथ की जो टीम है आप ऑलरेडी जीते हुए हो, तो आप कैसे खेलोगे? Let me ask you a question. How would you live if you had no fear of defeat? कैसे जियोगे आप अगर डर का भय ना हो? How would you live? That's the way your Father wants you to live. ऐसे ही आपका पिता चाहता है आप जियो. There can be a delay, but there is no defeat. देरी हो सकती है, मसीह में देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती. हार नहीं हो सकती. Amen. There is no defeat. Hallelujah. So आदत डालो. मैं चाहता हूं कि अब जल्दी से वचन में जाएंगे, but I just want to flow. Okay. मैं चाहता हूं ध्यान पूर्वक जब वचन पढ़ते हो, I want you to carefully observe the life of Jesus. Do you think he lived a defeated life or he lived a victorious life? Do you think he had challenges? Yes. Challenges don't mean defeat. आपको चैलेंज हो सकता है, सताव हो सकता है, और होगा. प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पे there will be tribulations. He said, but be off. He said, but you know what? Get a little sad. He said, be off. हिंदी में क्या लिखा है? मगर ढाढ़स बांधो. You should have a cheerful attitude. That means rejoicing in the time of adversity. Be of good cheer, for I have overcome the world.
Amen. बोलो, there is no defeat for me. I am more than an overcomer in Christ Jesus. आप जानते हैं, मैं जब जाता हूं, मैं कई विश्वासियों से मिलता हूं. There are very few people I have found which has a victorious mindset. जय की मानसिकता बहुत कम मसीहों में है. They are caught up to what they are suffering, what they are going through right now. अगर किसी पेंटिंग को आप बहुत पास से खड़े होकर देखोगे ना, you will not get the entire picture. You need to go some steps back. थोड़ा पीछे जाके you have to see the entire picture. कई लोग जो कर्जों में हैं, इस समय पूरे दिमाग में कर्जे ही कर्जे हैं. वो कर्जों की बातें करते हैं, सुबह उठते हैं तो कर्जों के बारे में सोचते हैं. कोई लोग जो बीमार हैं, they are consumed with their sickness and they are not able to see the bigger picture. You have to take few steps back. थोड़ा कदम पीछे लाके see the bigger picture. Jesus said, "Be of good cheer, for I have overcome the world." मगर सवाल यह है, यीशु मसीह आपने जय पाली तो मैं क्या करूं? You overcame. What about me? And he wants to tell you, but I live in you now. एक दुनिया का सबसे बेहतरीन जो एथलीट है, स्विमर है, माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स है, माइकल फेल्प्स, या माइकल फेल्प्स. सोचो माइकल फेल्प्स किसी के अंदर रहने लग जाए. जस्ट एन एग्जाम्पल. माइकल फेल्प्स किसी के अंदर घुस जाए, क्या वो अच्छी स्विमिंग कर पाएगा? अगर सचिन तेंदुलकर किसी के अंदर आ जाए तो क्या वो अच्छी बैटिंग कर पाएगा? तो ये उदाहरण तो कुछ भी नहीं, मगर जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you. Do you not think that he will teach you how to come out of every situation victorious? क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? The word of God says he leads us in triumph in all times, not sometimes, not in seasons. वो हमें मसीह के जय उत्सव में, the word there is victory celebration. आपने देखा कई शादियां कहीं होती है, वहां पे एक दिन का रिसेप्शन होता है. कई लोग हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, पर कई कल्चर्स हैं जहां पे हफ्ते हफ्ते सेलिब्रेशन होता है, हफ्ते भी होता है. जो मसीह की विक्ट्री है वो अब से लेकर अनंत तक हमारी लाइफ एक सेलिब्रेशन है. दैट मीन्स 100 years from now you will be celebrating his victory. अब से 100 साल बाद आप उसकी जय मना रहे होगे. 1000 years from now you will be celebrating his victory. 1000 साल अब से आप उसकी जय मना रहे होगे. 1,000,000 years from now you will be celebrating his victory. 1,000,000,000 years from now you will be celebrating his victory. बोलो, अब तो जय उत्सव ही जय उत्सव है. Your sufferings are temporary. The celebration is eternal. The devil wants you to focus on what you're going through right now. शैतान चाहता है आपका पूरा ध्यान उस जगह पे डाले जो आप जिसके थ्रू अभी जा रहे हो. God wants you. Apostle Paul says these light afflictions are nothing compared to the glory that will be manifested in. ये थोड़े समय के दुख, बोलो थोड़े समय के, पार्टी है अनंत तक, दुख है बहुत थोड़े समय के. You need to focus on the right place at the right thing. Amen. Celebration is